अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयदा फ़ातिमा और मैं दोबारा से आपके पास एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। कल हमने जो है वो क्रिमिनोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था और उसके फर्स्ट 60 एमसीक्यूज़ कवर किए थे। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और आज इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी जो है वो ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, चलें जी देखते हैं जी। आज हमने करना है 61 एमसीक्यूज़ से शुरू। ठीक है, चलें जी देखें ज़रा। Which criminal system perspective emphasizes individuals' right at all stages of justice system processing? जी, इसके ऑप्शंस हैं क्राइम कंट्रोल मॉडल, ड्यू प्रोसेस मॉडल, इंट्रैक्शनिस्ट मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ड्यू प्रोसेस मॉडल। ठीक है, what is defined as a series of interrelated propositions that attempt to describe, explain, predict and ultimately control some class of events? जी, ऑप्शंस हैं इसके सिस्टम, नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरी। तो इसका ऑप्शन आएगा थियोरी। अकॉर्डिंग टू जॉन एफ गैलीहर, लीगल डेफिनेशंस ऑफ क्रिमिनलिटी आर अराइव्ड एट थ्रू अ डैश प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन है सोशियोलॉजिकल, सेकंड है साइकोलॉजिकल, थर्ड पॉलिटिकल एंड मेन स्ट्रीम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सोशियोलॉजिकल। नेक्स्ट देखें जी, रॉन क्लेसन सीज क्राइम प्राइमरली एज जी वायलेशन ऑफ लॉ, प्रॉब्लम बिहेवियर, एन ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन रिलेशनशिप, अ फॉर्म ऑफ सोशल माल एडजस्टमेंट। तो जी क्या है जी, एन ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द प्लूरलिस्टिक परस्पेक्टिव सजेस्ट दैट बिहेवियर्स आर टिपिकली क्रिमिनलाइज्ड थ्रू जी journal agreement of members of society, a political process, the existence of shared norms and values and none of above। तो करेक्ट ऑप्शन है जी हमारा a political process। ठीक है, which of the following jobs probably would not fall within the field of criminalistics? जी ऑप्शन ए है फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, सेकंड है पॉलीग्राफ ऑपरेटर, थर्ड है फोरेंसिक एग्जामिनर एंड फोर्थ है करेक्शनल ऑफिसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोरेंसिक एग्जामिनर। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, अ पुलिस ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए क्रिमिनलिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्रिमिनल जस्टिस प्रोफेशनल और नन ऑफ अबव। तो सी ऑप्शन है जिसका क्रिमिनल जस्टिस प्रोफेशनल। 68 एमसीक्यूज देखिएगा ज़रा। डैश डेफिनेशंस फोकस ऑन क्रिमिनोलॉजी रोल इन अनकवरिंग द अंडरलाइन काजेज ऑफ क्राइम। जी ए ऑप्शन है साइंटिफिक, बी है कॉजेटिव, सी है डिसिप्लिनरी एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी इसका करेक्ट साइंटिफिक। साइंटिफिक डेफिनेशंस फोकस ऑन criminology's role in uncovering the underlying causes of crime। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू वेरियस प्रोफेशनल ग्रुप्स वायलेंस इन टेलीविजन, म्यूजिक, वीडियो गेम्स एंड मूवीज। ए ऑप्शन है may lead to increase level of violent behavior among children, बी है may lead to decrease level of violent behavior among children, सी may have no effect on levels of violent behavior among children एंड फोर्थ है सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी। ठीक है, may have no effect on levels of violent behavior among children। अच्छा जी 70 वाला एमसीक्यू देखिए, which one of the following is not an immediate input provided by the justice system that may enhance or reduce the likelihood of criminal occurrences? जी ए ऑप्शन है police response to a crime scene, the presence or absence of police officers, a person that act as a crime school, both A and B। तो both A and B जो है इसके ऑप्शन होंगे, police response time to a crime scene, a presence or absence of police officers, right? अच्छा बोथ ए एंड बी इसके ऑप्शन होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉपर्टी क्राइम बाय द यूसीआर? जी यूसीआर का जो है वो की तरफ से प्रॉपर्टी क्राइम कौन सा नहीं है? रॉबरी, बर्गलरी, आर्सन और थेफ्ट। तो रॉबरी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन वाई रेप विक्टिम्स फेल टू रिपोर्ट देयर विक्टिमाइजेशन? ए ऑप्शन फियर दैट द क्राइम इज नॉट इंपॉर्टेंट इनफ टू रिपोर्ट, फियर ऑफ द परपेट्रेटर, फियर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड शेम। फोर्थ ऑप्शन है जी इसका शेम। अकॉर्डिंग टू Elliot Curie, the dash is the rate of crime calculated on the basis of crime that would likely be committed by those who are incapacitated by the criminal justice system। जी ए ऑप्शन है एक्चुअल क्राइम रेट, बी है क्रिमिनलिटी इंडेक्स, सी है लैटेंट क्राइम रेट एंड फोर्थ है क्लियरेंस रेट। सो डी ऑप्शन इज द बेस्ट, क्लियरेंस रेट, राइट।
74 MCQs है. The first step in any research is to develop a research design, choose a data collection technique, C है review the finding or identify a problem. So A option is correct. Develop a research design. ठीक है. 75 MCQs है. A dash is especially valuable when aspects of social setting are beyond the control of a researcher. तो A option है इसका one group प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन. बी है केस स्टडी. थर्ड है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एंड फोर्थ है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है. आगे देखिए, दिस इज ऑफन कॉल्ड द रियलिटी प्रिंसिपल. रियलिटी प्रिंसिपल आईडी, ईगो, सुपर ईगो और नन ऑफ दीज. तो करेक्ट वन इज द ईगो. ठीक है. द कंडीशन ऑफ द वीक सुपर ईगो sublimation or a death wish being possible sources of criminal behavior are part of what theory? G. Anomy, social learning, primary deviance or psychoanalysis. So correct option is psychoanalysis. This perspective states that the formal agencies of social control are best merely coerce the unempowered or the disenfranchised to comply with the rules established by those in power. तो A ऑप्शन है social control, B है neoclassical, C है labeling and fourth है conflict. right? अच्छा, fourth one is the correct one, conflict. नेक्स्ट देखिए, हु आर द थ्योरिस्ट ऑफ पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी. ए ऑप्शन है पार्क एंड बर्जस, बी है स्काइज एंड मार्जा, सी है क्लोवर्ड एंड ओहलन, फोर्थ है पेपिनस्काई एंड क्विनी. तो इसका जो है वो फोर्थ ऑप्शन है पेपिनस्काई एंड क्विनी. ठीक है. 80 MCQs देखें. दिस थ्योरी हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द कंपैशनेट क्रिमिनोलॉजी. जी. ए ऑप्शन इज क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी, बी इज सोशल कंट्रोल थ्योरी, सी इज पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी एंड फोर्थ इज जनरल थ्योरी ऑफ क्राइम. सो इट्स द करेक्ट वन इज पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी. पीस मेकिंग क्रिमिनोलॉजी. Crimes that occur because of a diseased mind or disordered personality may be from condition known as what? A1 is secondary deviance, B is legal relativism, C is subculture of violence and D is psychopathy. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज साइकोपैथी. ठीक है. 84 what assumptions are included in the most classical theory of crime causation? A option is pain and pleasure are the two central determinants of human behavior. B is crime prevention is possible through swift and certain punishment that offsets any gains to be had through criminal behavior. C option is crime is caused by the individual exercise of free will and fourth is D, all of the above. All of the above is the correct option. Right. Next one, this theory posits that lifestyle significantly affect both the volume and type of crime found in any society and risk of criminal victimization varies dramatically among the circumstances and location in which people place themselves and their property. A is routine activities theory, B is anomy, C is positivism and D is conflict theory. So option A is correct one, routine activities theory. Next, 84 देखें. व्हाट इज द मेन proposition of routine activities theory? A1 is criminal behavior is learned, B is crime is the result of the powerful asserting their dominance over the powerless, C is crime is the result of weakening of the bonds through society and D is crime is likely to occur when a motivated offender and a suitable target come together in the absence of capable guardian. Right. So D option is the correct one. Crime is likely to occur when a motivated offender and a suitable target come together in the absence of a capable guardian. ठीक है. 85 देखिए. What terms describe a throwback to early stages of evolution where individuals were not sufficiently mentally advanced for a successful life in the modern world? A1 is anomy, second one is somatotype, C1 is atavism and fourth is innovator. So C option is correct one, atavism. Okay. 86 ऑप्शन देखिए. अकॉर्डिंग टू शेल्डन विच बॉडी टाइप इज मोस्ट प्रोन टू aggression, violence and delinquency? A1 is endomorph, B1 is ectomorph, C1 is mesomorph and fourth one is blotomorph. So C option is the correct one, mesomorph. Okay. Next देखिए. This United States Supreme Court case dealt with the eugenics movement. जी. A1 is Brown v. Board of Education, Buck v. Bell, Boston v. United States and Becker v. New York. So B option is correct, Buck v. Bell. ठीक है.
Buckwheat Bell. These theories highlights the role of human DNA, environmental contaminants, nutrition, hormones, physical trauma, and body chemistry in human cognition, feelings, and behavior. A option is classical school, B is social process, C is conflict, and fourth one is psychobiology. So fourth option is correct one, psychobiology. Okay, this is the psychological principle that holds that the frequency of any behavior that includes criminal or deviant behavior can be increased or decreased through reward, punishment, and association with other stimuli. So A1 is anomy, B is conflict, C is conditioning, and 4 1 is none of these. So C option is correct one, conditioning. Conditioning is correct one. 90 का देखिए, these individuals are characterized by disordered or disjointed thinking in which the types of logical association they make are atypical of other people. G, A option is schizophrenics, B is innovators, C ritualist, and fourth fatalist. So A option is the correct one, schizophrenic. Okay, 91 देखिए ज़रा, this term is defined as the attempt to drive a composite picture of an offender's social and such psychological characteristics from the crime he or she committed and from the manner in which it was committed. So it's A option is constitutive criminology, B option is deviance detection, C option is psychological profiling, D option is crime scene separation. So C option is correct, psychological profiling. Psychological profiling, right? 92 option देखें. According to anomy theory, this individual agrees with the goals but disagrees with the means and may be the involved in white collar crimes or property crimes. First is retreatist, B is rebel, C is ritualist, and fourth is innovator. So fourth one is the correct option, innovator. ठीक है. 90 वाला 3 वाला देखिए, एडविन सदरलैंड formulated what theory? A option is anomy, B is cultural conflict, C is social learning, and fourth one is differential association. So the correct option is differential association. Differential association. Okay, 94. Who is the theorist for containment theory? Who is the theorist for containment theory? A option is Sutherland, B is Merton, C is Durkheim, and 4 is Reckless. So Reckless is a theory for contaminant theory, containment theory. Okay, 95 वाला देखिए, who are the theorists for techniques of neutralization? A1 is Skies and Marza, B1 is Gottfredson and Hirschi, C is Wolfgang and Ferrasuti, and D1 is Burgess and Akers. So A1 is the correct option, Skies and Marza. Skies and Marza are the correct options. 96 का देखिए, who is the theorist of social control theory? A1 is Reckless, B is Merton, C is Hirschi, and fourth one is Papinski. So C option is correct, Hirschi, right? Hirschi. Okay, 97 MCQs देखिए ज़रा. The program of research on the causes and correlates of delinquency identified 3 distinct pathways to delinquency. This pathway is marked by minor aggressions such as bullying that develop around age 11 or 12 and leading to fighting and physical violence. A option is authority of conflict pathway, B is overt pathway, C is covert pathway, and D is none of the above. So B1 is the correct option, overt pathway. Overt pathway, ठीक है, जो O से शुरू हो रहा है. B option is the correct one. Okay, next देखिए, this perspective placed the blame for criminality and deviant behavior squarely on officially sectioned cultural and economic arrangements. The distribution of wealth and power in society was held to be the primary causes of criminal behavior. A option is peacemaking criminology, B is radical criminology, C is right realism, and fourth is retrospective interpretation. So B is the correct option, radical criminology. ठीक है, radical criminology. 9th one देखें, 99 one देखें. This criminology refers to the process by which human beings create an ideology of crime that sustains it as the concrete reality. A central figure is its assertion that individuals shape their world while also being shaped by it. A option is somatotypes, B is constitutional criminology, C is constitutive criminology, and fourth is social learning theory. C option is constitutive
criminology, constitutive criminology. 100 MCQs देखिए. This theory views crime as the product of socialization and sees it as being acquired by criminals according to the same principles that guides the learning of law-abiding behavior in conformist. A option is differential association, B is concentric zone, C is containment, and fourth is neutralization. So A option is the correct one, differential association. ठीक है जी. थोड़े से इसके MCQs जो हैं वो रह गए हैं, तो मैं ना नेक्स्ट जो है वो वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ. तो आपकी जो ये चैप्टर 1 है आपका 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, बस थोड़े से MCQs रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट करती हूँ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.